Dear students, welcome to session 9 of Mobile and Pervasive Computing CS 710. हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. We were talking about how can we make the components of software platform independent. हम किस तरीके से pervasive सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना सकते हैं सो दैट ये जो एक मसला हमें आ रहा है पोर्टेबिलिटी का, वी टेक केयर ऑफ दैट. पोर्टेबिलिटी का मसला, इफ यू रिमेंबर, वाज कमिंग बिकॉज देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, देयर आर सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर अस टू राइट सॉफ्टवेयर फॉर ऑल ऑफ देम. इसलिए हमने सोचा कि इसका एक जो हम सोल्यूशन है वो इस तरीके से बना सकते हैं कि हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिखना शुरू कर दें. और उसके लिए जो हमने वे ढूंढा वो ये था कि व्हाई डोंट वी गो एंड बोरो टर्मिनोलॉजी फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन और मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, जो कि हमने बहुत थॉरोली डिस्कस किया, उसको लेके चलते हैं एंड वी मेक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. हम मॉडल को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर देते हैं, हम व्यू को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर देते हैं और हम कंट्रोलर को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर देते हैं. प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस वी मीन दैट regardless of which platform your application is used on or regardless of from which platform the request is generated, we can service that request or application flow will be same as expected. Although it would be different, yes, I mean desktop environment में अगर आप बात करें तो उसमें शायद application का behavior different होगा, आपको जो view नज़र आ रहा होगा वो different होगा, लेकिन मोबाइल में it would be a comparable view. By comparable view I mean कि वो वेब पेज जो वहाँ पर शायद हैवी ग्राफिक्स के साथ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट के साथ शायद नजर आ रहा हो, सो दैट द बैंडविड्थ इज नॉट यूज्ड मच एंड द कंटेंट्स आर स्टिल डिलीवर्ड. तो ये एक आइडिया था दैट मेक एवरीथिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. उसमें हमने ये भी देखा कि कुछ चीज़ें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बड़े आराम से हो सकती हैं बट अदर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. सच एज यूजर व्यू इज अ वेरी complex component, and if you want to make it platform component, some of its functionality can be platform independent but some of it can't be. उसके लिए हमने देखा था कि हम कैसे transcoding proxies use करते हैं to deliver different contents on different platforms. हमने उसके लिए देखा था कि कैसे हम web pages use करते हैं to achieve consistencies in the views. Here we talked about controllers and we talked about why it is important to have platform independent controllers. And then we come to the model and we said that regardless of the application being thin client or thick client, the model will always reside on a server component or a network component. So it is important for model to be platform independent in a sense that regardless of which application or which platform would access the business logic or the data store, it would be able to cater it. So these are the three components that we see, and we saw that okay, these are the components we should be making platform independent. जब हम मॉडल को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करने लगे तो मॉडल में एक चीज़ ये आ गई कि जी आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जब आप आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आप ये भी डिसाइड करते हैं कि किस एप्लीकेशन का कितना कंपोनेंट कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगा, कौन सी एप्लीकेशन का सिर्फ यूआई जो है वो प्लेटफॉर्म मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चलेगा और बाकी नेटवर्क एप्लीकेशन पे चलेगा, और कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जिनका यूज़र इंटरफेस यानी कि व्यू कंपोनेंट और कंट्रोलर दोनों मोबाइल डिवाइसेस पे चलेंगे जबकि मॉडल जो है वो नेटवर्क एलिमेंट्स पे या किसी सर्वर पे चल रहा हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्ट्स द अल्टीमेट वर्किंग ऑफ एनी एप्लीकेशन. थिन क्लाइंट वर्क्स डिफरेंटली देन compared to thick client.
और इसमें जो मेजर रोल है that is played by connectivity. Thin client applications rely heavily on connections. They always need a connection element in them. जब तक वो connected हैं, they would perform. When they are disconnected, they wouldn't perform. इसके लिए हमने एग्जांपल देखी थी route planning की कि although we were able to gather my current location and where I want to go, that is my destination, लेकिन चूंकि मेरे पास connectivity नहीं है, therefore I cannot connect to the server and request it कि now plan the route for me. So for thin client application, the connection or connectivity is very important. उनके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर वो connectivity नहीं होगी तो they will stop performing. The second category in this is thick client applications. और thick client applications की जब हम discussion कर रहे थे तो we said that in thick clients our view and controller, that is our user interface, would be running on the device itself, whereas our business logic and the data stores combined together, we call it a model, will be running on a server. In this scenario, it may be possible that your application may run. कुछ ऐसे scenarios हो सकते हैं जिसमें ये application run करेगी. वो किस तरह? वो इस तरह से कि जब आपने controller move कर दिया device platform पे, you have given the application some intelligence. आपने उसको थोड़ी सी intelligence provide कर दी. Now it knows कि I am which environment I am working on, जो कि context awareness से आपके पास आया that okay, one of the major important factor is your bandwidth. And you find out that your bandwidth is not very good either, or there are cases when you lose connectivity and then you get connectivity again. So the connectivity is intermittent. That is, in some spots you have it and then you move it to another one, then you lost it and it comes and goes. So when you give any application this intelligence, then it is free to make some decisions. And what kind of decisions this could be? This could be decisions that what data to cache. That is, when the connection is poor while a user is viewing certain pages, it will in the background bring some other pages. Or if the connection is intermittent, that it comes and goes, then it will, whenever the connection is established, it will pick some data and store it with him so that when the user requests for the next page, it is available regardless of whether you are connected to the server or not. So thick client applications give you additional leverage in this regard. And now the connectivity is still important, but it is not a deal breaker. That is, your application may still continue, but in sort of degraded conditions. Only those operations that provide sensible results are allowed in this kind of degraded environment. That is, if a web page is requested and you can gather or bring the correct web page, then this operation is allowed. But if you think that it will be some garbage, some of it would be the true data and some of it would be garbage, then this operation might not be allowed. And then we moved on to discuss the third type of applications, and that was called autonomous applications. In autonomous applications, all the three components, that is model, view and controller, all three of them resides on the application itself or the device itself. Now the connectivity have very less priority because all the components are within the device. But wait a minute, when we started this discussion, didn't we said that we would discuss only the applications for whom the network connection is needed? And now we are saying that here are the type of applications that are autonomous. That is very good. That is because smartness of environments vary. हर जगह हमें सेम कनेक्टिविटी नहीं मिलती, और जब हमें सेम कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो एक वो क्वेश्चन मार्क एक फैक्टर पे लग जाता है कि मे बी हमें कनेक्टिविटी मिले या ना मिले. तो अगर हम इस फैक्टर को ऑल टुगेदर एलिविएट कर दें
So it would be good, yes, autonomous applications would be good because now we have a self-contained application जिसमें सारा कुछ है and we don't need network. लेकिन वहाँ पर हमने एक पहली assumption कोई अपनी negate कर दिया कि जी हम वो वाली applications discuss करेंगे जिनको at some point or other network connectivity require होगी. तो autonomous applications are not itself autonomous. इतनी भी autonomous नहीं है कि उन्हें network connectivity की ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि वो नेटवर्क कनेक्टिविटी के बगैर भी अपने फंक्शंस प्रॉपरली एंड फुल मोड में अंजाम दे सकती हैं. इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं. ऐसी कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है जिसको नेटवर्क कनेक्टिविटी भी चाहिए हो और उसको खुद वो फुली ऑटोनोमस भी हो. इसकी एक एग्जांपल जो है वो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से ले लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, all these operating systems are self-contained. उसमें सारा कुछ, सारी functionalities, all those things that are required to operate our computers are built in. लेकिन there are cases when you need some patches, like security patch release where there was a vulnerability that was discovered and then you have to incorporate that into your operating system because that might be dangerous for your computer. In that case, you connect to a server, get that patch, incorporate it into your operating system, and you can continue, right? So operating system itself is self-contained, it is autonomous. Even if you don't provide it network connectivity, it will still work perfectly. Lekin there are cases when network connectivity is needed for one reason or the other. Same is the scenario with operating systems, especially those operating systems which are continuously under development. Mobile operating system जैसे कि Android. Now Android is very much under the development. It is open source, so it is community effort. So many people are working on it, and you see many patches of it coming out within short span of time. इवन सिमियन को अगर हम डिस्कस कर लें, सिमियन ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत एस्टैब्लिश्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन टिल टुडे यू सी द अपडेट्स ऑफ सिमियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कमिंग आउट. दैट इज बिकॉज software development is a continuous effort. It's not that you write a piece of software and you will say that it's bug free, it has everything. You can't make that claim simply because by default all the softwares are buggy. Regardless of आप उसमें bugs का level तो ज़रूर कम कर सकते हैं, उसमें आप error का level तो ज़रूर कम कर सकते हैं, लेकिन you can't never make this claim कि this is bug free software. तो इसलिए you will continue receiving patches, इसलिए उसमें updates आते रहते हैं. And even though your operating system is self-autonomous, you still need network connectivity if you want to update your operating system. If you don't update, that is fine. I mean, आपका मोबाइल उसी तरीके से चलेगा, आपकी एप्लीकेशन उस तरीके से चलेगी. इसको ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी सी हैवी एग्जांपल होगी. गेम्स की एग्जांपल ले लें. There are cases when you connect to the server and get some additional levels of the game. So game itself would work properly and would work very fine. उसमें 3-4 लेवल जितने भी होंगे वो नेटवर्क कनेक्टिविटी के बगैर भी चल रहे होंगे, लेकिन if you want to get some additional levels, you will have to have network connectivity. या अगर आप multiplayer gaming करना चाहते हैं, that is you want to play with your friends and other people, then you again have to join a network. Then again you will need connectivity. So these are the kind of applications जिनके लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है, लेकिन स्टिल दे आर ऑटोनोमस एप्लीकेशंस. दे आर ऑटोनोमस इन अ सेंस दैट every component, every software architecture component that is required, that is model, view and controller, are embedded in it. Only some updates are on the server that you can connect to the server and get it for yourself. On the screen, I'm showing you a diagram of these applications and these varying spectrum of applications that we have thick client, we have thin client, and we have autonomous applications. One point to note here is that these are not yes or no kind of thing. That either you will have thick client and thick client has a very defined, confined boundary. This is thin client, this is thin client and it's have very confined boundary, and this is autonomous and it has very defined
boundary? No, it's a continuation. At some point you will see that there is a very minute difference between what we are calling as a thick client and what we are calling as a thin client. But this is how this thing works. Even if you think about autonomous systems, the difference between autonomous systems and the thick client applications is just that the model is residing at server in one case, and the other case the model is residing in the application or the platform itself. We can also change this to make model reside in the platform, some portion of it, maybe not more. We can make it the part of the controller, and then controller would be already residing in the application itself. And as you see in the figure, this how the connectivity is affected. The thin client, if disconnected, they won't operate. Thick client can operate to some extent if there is no connectivity. And then we have autonomous systems where connectivity is good to have function, but if you don't have connectivity, still we will operate very much fine. The one important aspect or one important dimension when we talk about connectivity is disconnected operations. What is required for disconnected operations? वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डिसकनेक्टेड ऑपरेशंस को पॉसिबल करते हैं या नहीं करते? Caching is a technique that we use, or synchronization is a technique we use to achieve disconnected operations. But what are the other aspects, or what are the other dimensions of the operations that can happen in disconnected mode? वो कौन सी बेस वर्क है, वो कौन सा बेसिस है जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि जी डिसकनेक्टेड ऑपरेशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? पहली चीज़ तो ये है कि आपका प्लेटफॉर्म at both ends, on server end and on client end, would be able to provide environment for the execution of the application. That is, अगर कोई चीज़ server पे execute हो रही है तो your platform or your device should be equally capable of executing that application. अगर route planning server पे हो रही है तो your platform or your device will also have capability to do the same. In that case, or some limited capability. Say for example, it wouldn't show on the device because it has limited memory and limited resources. It wouldn't show you the whole map and the lines going from here and there. It will simply write this, that take first left, take right from this road, take left from this road, and then after this miles you will reach there. Some limited kind of ability should be there. But this is very important because if the route planning simply resides on the server itself, then disconnected operations is not possible because a major functionality is sitting on the server. The second thing in this regard is the code migration. That all your code is sitting on the server. Now, if you want disconnected operations to happen and you have capability in the device itself to run the application, then the code should be able to migrate. You should have leverage that code that is sitting on the server can be transported on the device itself and it will start running on the device. इसमें ये चीज़ आ जाती है फिर कि on server we have different programming languages. We use different programming languages like JavaScript, and on the device platform we might be running C or Java itself. Then how would that be possible? ये code migration किस तरीके से होगी? Do we would have transcoding something? But this is not transcoding. This is just a background thing. हम background में कुछ operations कर रहे हैं and we would like it to execute in the same fashion in the mobile, maybe some little bit of functionality. Just like I said, instead of plotting the whole map and the lines, I would just say the directions itself. But if I don't have the code with me, and if I don't have the leverage to execute that code, I wouldn't be able to do that too. So this is the second thing that I would need. And third thing again is the synchronization capability. That okay, I am disconnected, that is fine because I have alternates. I have alternates like I have caching. I have alternates like I have synchronization capability.
So when I am disconnected, that is my connectivity is lost, I have mechanism to cope with that. I have prefetched my data so that when I try to access something else, I would be able to show the users that this is your required data. And whenever I make some changes, I have synchronization mechanism that whenever my connectivity established back, I synchronize with the server and hand the server the newest copy. Here another important question arises, and that is that I am not the only one who is accessing that data. Let's say there are 10 users in the enterprise and all of them have access to that data and they can change it. What happens is that I picked up some data and I made the value of certain field as 10. There was another user using the same data and he simultaneously made that data as 20 or he changed the value to something else. The problem is that we both are disconnected. हमारा जो जिस वाईफाई के थ्रू हम कनेक्टेड थे सर्वर के साथ, वो वाईफाई उस वक्त बिजली की वजह से या किसी और वजह से माल फंक्शन कर गया और उस वक्त हम दोनों डिस्कनेक्टेड थे जिस वक्त हमने ये चेंजेस की. जब हम कनेक्ट बैक हुए तो हमारा सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म किक इन हुआ. जब सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म किक इन हुआ तो दो डिफरेंट वैल्यूज फॉर द सेम वैल्यूज फॉर द सेम फील्ड जो है वो सर्वर को चली गई. मैंने 10 भेजा, वो दूसरा यूजर जो उसको यूज कर रहा था उसने 20 भेजा. Now what would the server do? This again is an important part of disconnected operations, that when you synchronize, how would you resolve? First of all, how would you synchronize? That is the first part. And then second, how would you resolve the conflicts among the data? That when you come and resolve itself, when you come and synchronize the data, then maybe server has a different data set, you are coming in with a different data set and some other user will send some different data sets. How would you synchronize them? How would you merge them? This is again another important aspect of disconnected operations. So these three things, data synchronization, application hosting or execution environment, and code migration, defines whether an application would be able to run in disconnected operations or not. And this also concludes that, okay, now we have successfully seen that why it is important to have platform independent components and how can we make the three main components of the architecture, model, view and controller, platform independent so that it can execute on various different platforms. That brings us to the next dimension or the next area, and that is context awareness. When we talk about context awareness, and before talking about all sensors and triggers and all those things, let me start with a very primitive example of database. In database, what we do is we collect information from various sources. हम बहुत सारी different sources से information collect करते हैं और फिर हम उस पर कोई action perform करते हैं. अगर हम example लेना चाहें तो let's say electricity database की हम बात कर लेते हैं. एक central database है जिसमें तमाम जो subscribers हैं उनका data पड़ा हुआ है कि उन्होंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, उनका एड्रेस क्या है, उनकी मीटर रीडिंग क्या है और उनको कितना बिल पे करना है. अब हमने एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई सब्सक्राइबर जो है वो 2 महीने तक बिल पे ना करे तो वी विल डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और या हम जो है उसको एक नोटिस भेज देंगे या हम उन्हें कॉल करेंगे कि प्लीज़ आप अपना बिल जमा करवा दें बिकॉज आपने 2 महीने से अपना बिल नहीं जमा करवाया. The database itself is responsible of collecting the data and analyzing the data and seeing whether the data is relevant to the application or not. ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर आपने मीटर रीडिंग लिखनी है वहाँ पर आप ABCD लिख रहे हैं. It has to make sure that this is not happening. या ऐसा तो नहीं है कि मीटर रीडिंग जो है वो पिछली मीटर रीडिंग जो थी वो 100 थी और जो नई मीटर रीडिंग आ रही है वो 50 आ रही है. It has to make sure कि इस तरह की चीज़ें ना हो. दूसरा, it has to make sure कि the relevant information is going inside the database.
जब ये चीज़ हो जाती है तो देन अ रूल अप्लाइज ऑन दैट, एंड देन दोज सब्सक्राइबर्स हु मीट दैट रूल, जिन्होंने अपना बिल जो है वो 2 महीने से जमा नहीं करवाया हुआ, उनकी एक लिस्ट सामने आ जाती है. दिस अफेक्ट और these rules are normally called triggers in database language. अब सेंसर्स और एक्चुएटर्स की बात करते हैं. सेंसर्स और एक्चुएटर्स भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं. सेंसर is responsible for collecting data, analyzing data, and then there is a complementing component that is server, जहां पर वो सारा कुछ स्टोर हो रहा है और वहां पर डाटा एनालाइज हो रहा है. Second is the actuator, the element that make the action happen. So अगर हम सेम चीज एक्चुएटर और सेंसर्स को देखें तो the function it is performing is that of trigger and effect. One component is collecting data and analyzing data and then creating a trigger on that data. Whereas there is an affecting component that creates the effect for it. Sensors collect data, analyze the data, and then create a trigger for it. That, okay, the tire pressure is low or the fuel is low in the tank. And then the actuator does the effect for it, that it notifies the user that get the tire pressure checked or get the gas filled. So there are two components. Whenever we talk about context aware applications, there are two components, triggers and effect. जब हम context aware applications की बात करते हैं तो अब हम मूव कर रहे हैं थोड़ा सा कि how can we create platform independent context aware applications. ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस जिनकी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी कम से कम हो. एंड दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ, पहले हमने जो प्लेटफॉर्म है उसको हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किया, दैट इज आवर मॉडल व्यू कंट्रोलर कॉन्टेक्स्ट, उसको हम प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट ले गए. अब जो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी थी दैट इज कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस, हमने उनको उठाया एंड नाउ वी वांट देम टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. उसको अगर हम रिवाइज करें तो हमारे पास तीन चीज़ें थी जब हम कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस की बात करते हैं. पहली चीज़ ये थी कि हमारे जो सोर्सेस थे ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे वर वेरी डायनामिक, दे वर हेट्रोजीनियस, एंड थर्ड दैट सम ऑफ द सोर्सेज आर प्रोवाइडिंग अस विद अ वेरी लो लेवल इंफॉर्मेशन. इनको एक दफ़ा रिविजिट कर लेते हैं. द डायनामिक nature of context aware or context resources come from the fact that there are number of resources that will be providing you with the same information. आपके GPS coordinates can come from satellite, can come from the GPS network itself, or can come from the Wi-Fi. So these are the three sources from where your GPS coordinates are coming from. Second, the heterogeneity. All these three resources might be providing you the information in different mechanism. आपका जो सैटेलाइट से आपके पास डाटा आ रहा है वो शायद आपको डायरेक्टली लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बता दे. जो आपके पास GPRS नेटवर्क से आ रहा है वो शायद आपको आपका सेल नंबर बताए और उससे देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म जिससे वो आपके लॉन्ग और लैट को डिस्क्राइब करे. जो आपका वाईफाई है मे बी इट वुड बी एबल टू टेल यू द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग दैट यू आर कनेक्टेड टू, और उसके बाद यू विल हैव टू एम्प्लॉय एक्स्ट्रा मैकेनिज्म टू फाइंड आउट व्हाट इज योर करंट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. इसमें थर्ड कंपोनेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोअर लेवल इंफॉर्मेशन. लॉन्ग और लैट इटसेल्फ डजंट टेल यू एनीथिंग. आपको लॉन्ग लैट अपने पता भी चल जाते हैं दैट योर लैट इज 51 एंड योर लॉन्गिट्यूड इज 100. You wouldn't be able to say anything about this information. आपको ये नहीं पता चलेगा कि what does this longitude and latitude translates into until you find out that okay, place it on the map. एक different applications होगी जो कि आपको map पे place करके देगी, and then you will say okay, yeah, I am on this city and I am in this area. This longitude and latitude translates into this particular place. So this difference resources that provide you information, they may not be self-contained. ऐसा नहीं होगा in most of the cases कि आपको जो पहला source of information मिला that was correct.
या जो पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिला दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड करेक्टली, या आपके पास जो पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था आप उसी से कनेक्ट हुए और आपको यू वर एबल टू गेट एवरीथिंग. In majority of the cases, you will have to probe many different resources. You will have to probe different applications. You have to employ different techniques to get the same piece of information. और इसमें जब हम ये ट्रिगर और अफेक्ट वाला मैकेनिज्म लेके आते हैं तो you can see कि all these are triggering mechanisms. All these are related to data collection, data analysis, and then creating a trigger on that application. We haven't come to the affect application yet. We are only talking about the trigger mechanism or trigger side of the application, that how can data will be collected, how the data will be analyzed, and how will be data will be put into good use or will be created a trigger on it. GPS आपने डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया, आपने उसको सैटेलाइट से कलेक्ट किया, आपने उसे वाईफाई के थ्रू कलेक्ट किया, आपने उसे जीपीआरएस नेटवर्क के थ्रू कलेक्ट किया. द फैक्ट रिमेन्स दैट ऑल यू डिड वाज जस्ट कलेक्ट इट. आपने उसको एनालाइज किस तरीके से किया, वाईफाई ने आपको सिग्नल स्ट्रेंथ दे दी, आपने उसको एनालाइज किया कि अच्छा ये तो मुझे सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है, आपने उसको किस तरीके से लॉन्ग लैट पे ट्रांसलेट किया. दैट इज अगेन मैकेनिज्म ऑफ ट्रिगरिंग, दैट इज डाटा collection, analysis, and creating a trigger on it. How would we make this data collection or the context aware part platform independent? पहली चीज तो ये है कि अगर हमारे sources are unreliable, which by definitions are, हम जब परवेसिव कंप्यूटिंग में जाते हैं तो हमारा एक वो बेसिक जो थ्योरम है या बेसिक एक लाइन है, दैट इज कि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो अनरिलायबल है. The smartness of space vary from one place to another. When we give that, then we will have to take into account that okay, our resources, our context resources जहाँ से हम data collect कर रहे हैं, they are also unreliable. उनकी quality of service might not be that good. In some cases, we are able to collect data. In some cases, we are not able to collect data from them. Then what we will do? The first step for making anything platform independent is make it a layered approach. And by layered approach, what I mean here is कि आपकी application को long and lat चाहिए. That's what your application needs. Then it should give it to a lower layer, saying that I need a long and lat और मुझे इस format में चाहिए. And then you should forget about it. ये अब लोअर लेयर का काम है कि वो किस जगह से उसको लेती है, कौन से सोर्स के साथ बाइंड करती है, किस फॉर्मेट में उसके पास डाटा आता है, हाउ इट इज एबल टू ट्रांसलेट दैट डाटा इनटू लॉन्ग एंड लैट. व्हाइल आस्किंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन, द एप्लीकेशन डिडंट सेड दैट विच लोकेशन इट वांटेड फ्रॉम, या उसे कौन से पर्टिकुलर रिसोर्स से चाहिए. एंड दिस इज द आइडियल अप्रोच. हमारी एप्लीकेशन को तो सिर्फ लॉन्ग एंड लैट चाहिए ना, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हो, चाहे वो जीपीआरएस नेटवर्क के थ्रू आ रहे हो, चाहे उसको वाईफाई किसी तरीके से ट्रांसलेट करके दे रहा हो. ऑल वी नीड इज लॉन्ग एंड लैट, एंड एज लॉन्ग एज आई हैव लॉन्ग एंड लैट मेरा काम चल जाता है. तो इसको हमने लेयर्ड अप्रोच में डाल दिया कि ऊपर मेरी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी चल रही है, नीचे एक लेयर मैंने एडिशनल क्रिएट कर दी जो कि ये मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कि इट विल कलेक्ट डाटा, it will analyze it, and it will trigger me when a specific event happens. So all the collection and analysis is given to another application or another layer जो कि ये मेरे लिए काम कर रही है, and it passes all the data and it give me in the refined form. All I specified is that I need a location and I need it in longitude and latitude format. I can do the similar things for many of my applications. I can write a security module जिसका काम सिर्फ ये होगा कि it will authenticate user for my application. That is all it is supposed to do, and at the end it will tell me that this particular user is using this application based on the login information it has provided. So for making the application, a context aware application platform independent, that is we are trying to take the context awareness
out to a platform independent domain, this is the approach that we use. That we don't pinpoint a resource unless required. All we say is that what is the information we need and in which format we need it. अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे if you try to find out your GPS location, so it does number of things. It will probe the satellite, it will do the network assisted GPS location too, but you wouldn't know. For you, at the end of the day, when it is able to find you the GPS location, it will plot you a dot on a map. It has taken care of all the lower layers. उसने data collect किया, उसने data analyze किया, it find out that this data is relevant to it, then it picked up the map and it plot the data on that point. And that's what we were concerned with. So this is the approach that we use when making a context aware application platform independent. इसमें दो चीजें आ जाती हैं. एक ये कि कुछ sources of context are passive. जब हम passive कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि those are the data stores जहाँ से हमें information pull करनी पड़ती है. इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल वो डाटा सोर्सेज हैं जो कि किसी वेब सर्वर पे पड़े. फॉर एग्जांपल वेदर. जब हमें वेदर की इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो देन वी कनेक्ट टू अ सर्वर, वी टेल इट आवर लोकेशन एंड इट गिव्स अस द वेदर conditions at that particular location. This is a pull based mechanism or passive mechanism. कुछ other sources हैं जो कि active हैं और push based हैं, जैसे कि sensors. Sensors are actively collecting data from the environment and then they are pushing it to their destination. वो destination कोई server भी हो सकती है, वो destination कोई application भी हो सकती है, वो डेस्टिनेशन कोई डेटाबेस भी हो सकती है, बट दे आर डूइंग इट एक्टिवली. दे आर डूइंग इट ऑन पीरियोडिक बेसिस और aperiodic basis, but what they do is that they collect the data and then they push it to their designated recipient. Your application should be able to collect data from both these sources. If the sources are active, it should be able to receive data from them. If the resources are passive, then it should be able to probe them and collect data from them. This is again a part of making the context-aware application platform independent. And this is a very important dimension of it, because sensors or web servers play a very important role in providing you with the context information. Such as अगर आपने टेम्परेचर अपना मालूम करना है environment का, तो your mobile phone may be equipped with the sensors that can do that. अगर आपने अपनी speed मालूम करनी है, that at what speed I am going, your mobile phone might be able to do some calculations based on कि आपने कितना distance travel किया है और उसकी base पे वो आपको बता दे कि उसकी speed क्या है. आपकी device might be able to tell you that okay, in which direction you are heading. But in all these cases, it is passive. It is not giving me actively the information. I probed it and I said, give me my GPS location, and it find out that okay, this is the GPS location and it has given to me. मैंने उसे पूछा कि इस एरिया का टेम्परेचर कितना है, तो उस वक्त वो उसने प्रोब किया और उसने मुझे बता दिया कि ये टेम्परेचर है. मैंने पूछा कि मेरी डायरेक्शन कौन सी है, उसने प्रोब किया एंड इट टोल्ड मी कि ये डायरेक्शन है. इट इज नॉट डूइंग एक्टिवली. इसके कंपैरिजन में एक एक्टिव एप्लीकेशन कौन सी होगी? लेट्स मेक अ एप्लीकेशन ऑन द गो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि आई वुड राइट एन एप्लीकेशन जो कि मेरे सेल फोन को ट्रैक करेगी टू अवॉइड थेफ्ट. What I have done is I have written a piece of software that resides in my mobile phone and it publishes my current location on the server. और सर्वर क्या करता है कि उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड इट प्लॉट्स इट ऑन द गूगल मैप एनवायरनमेंट. अब होगा क्या? होगा ये कि एट एवरी गिवन टाइम और एट एवरी गिवन frequency
2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, वट एवर आई हैव डिसाइडेड, मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी एक सिग्नल जाएगा, एक डाटा पैकेट जाएगा जिसमें मेरी करंट लोकेशन होगी, एंड दैट इज प्लॉटेड ऑन द सर्वर इटसेल्फ. So now this is data being published actively, that nobody has probed me to tell the current location, लेकिन मैंने एप्लीकेशन इस तरीके से लिखी हुई है कि वो हर थोड़ी देर बाद मेरा डाटा जो है वो एक्टिवली पब्लिश होता है और वो जाके सर्वर को मिल जाता है और सर्वर उसको प्लॉट कर देता है. इसमें अगर हम इफेक्ट और ट्रिगर का मैकेनिज्म डालना चाहें तो लेट्स ट्रांसलेट इट इनटू अ रेंटल कार. एक रेंटल कार कंपनी है और उसकी पॉलिसी है कि हम किसी को जो रेंटल कार है वो शहर से बाहर लेके जाने नहीं देंगे. और इन दिस पॉलिसी हाउ दे इन्फोर्स इट इज कि उन्होंने इसी तरह का एक मैकेनिज्म लगाया हुआ है कि जो सेंस करता है करंट जीपीएस लोकेशन, जब उसको जीपीएस लोकेशन मिल जाती है तो वो उसको ट्रांसलेट करता है इनटू द मैप कि ये किस एरिया में है, और इफ दैट एरिया इज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द सिटी इट सेंड्स इट्स अ सिग्नल, और उस सिग्नल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका इंजन स्टॉप हो जाता है. दिस इज बीइंग डन एक्टिवली, दैट आपकी कार जो है वो एक्टिवली मॉनिटर हो रही है कि एट विच लोकेशन इट इज, वो किस लोकेशन से इस वक्त गुजर रही है. और जब वो सर्वर के पास जाता है तो सर्वर उसको एनालाइज करता है, सर्वर उसको स्टोर करता है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई अफेक्ट होना होता है, दैट इज अभी जो मेरे पास करंट जीपीएस लोकेशंस आई हैं दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिटी, तो उसके अगेंस्ट अफेक्ट ये होगा कि आई विल सेंड अ सिग्नल एंड कार शुड स्टॉप. तो इस ट्रिगर जो मैंने लिखा हुआ है, इस ट्रिगर के अगेंस्ट ये अफेक्ट होता है, एंड व्हेन such a GPS location goes to the server, this affects kicks in or car stops. So this is a mechanism that is being done actively. तो जब भी आप platform independent context collection application लिखेंगे या context aware application लिखेंगे, तो you will have to take into account that some information sources, first of all, you wouldn't rely on one. You will make sure that your applications bring all the possible resources of information collection. GPS collection है तो GPS coordinates find out करने के लिए जितने भी possible mechanism है, your application should employ it. Second, you should also take into account that some of them are push based, other of them are pull based. कुछ active है और कुछ passive है. जो active है, your application should have mechanism to subscribe to them. That is, you tell them that okay, whenever you publish this information, please give it to me. जो passive है उनके लिए your application should have mechanism to go to them and fetch the required data. In this way, you are making your application platform independent. That you have find out multiple resources, that is one, and second, you have talked to them. Either you have agreed with them that they will give you data whenever they will publish the data, or you will just go to them and pick the required data and bring it to you. So these two are very important concepts when it comes to talking about developing platform independent context aware applications. To summarize, we have talked about 4 things today. Or overall, when we talked about pervasive software development, we talked about 4 things in particular. We talked about that we will make the device independent views possible. How would we do that? How would we make platform independent views possible so that regardless of which platform the device will operate, our view would be consistent. Then we talked about how will we make platform independent controllers so that regardless of which platform our application would execute, the flow of application would be consistent, the flow of application would be according to the architecture or the state transition diagram of the application itself. जिस तरीके से हमने उसको envision किया, definitely platform to platform चीजें तो vary करेंगी. In some cases, our flow might be different because the screen resolution is different and we have broken down things. हमने
शायद बटन्स नहीं दिखाए, हमने उसकी जगह सिर्फ टेक्सचुअल लिंक दे दिया, या हमने कोई चीज़ बहुत बड़ी थी उसको हमने ब्रेक डाउन करके 2 चीज़ों में तकसीम कर दिया। एक वेब पेज उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, ब्रोक इट इनटू 2, सो वो 2 डिफरेंट पेजेस बन गए। डेफिनेटली इस तरह की वेरिएशंस तो आएंगी, लेकिन ओवरऑल द एप्लीकेशन अगर हमने नेक्स्ट किया है तो इट शुड टेक अस टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये ना हो कि हम किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं तो नेक्स्ट वुड टोटली शोइंग अस अ रैंडम पेज। Third, how would we make platform independent models? That is, regardless of which device is accessing the application on, or regardless of which device the application is running on, our model should be able to detect and adopt accordingly. ये एक बहुत important factor है because our business logic and our data store, both of them resides in the model. So when we make platform independent, if we don't, let's say for example sake we say कि अच्छा यूज़र इंटरफेस समझ में आती है because this is where user interacts, तो कंट्रोलर भी समझ में आती है क्योंकि वो बटन्स और उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, दिस इज ऑल वेरी मेक सेंसिबल, तो इनको बना देते हैं। व्हाई वुड वी मेक मॉडल? मॉडल तो हमने डिस्कस किया इन एनी केस वुड बी रिजाइडिंग इन द सर्वर इटसेल्फ, और जब वो सर्वर पे चल रहा होगा तो वो तो एक ही डिवाइस है जिस पे उसने चलना है, तो उसके लिए तो हम व्हाई डोंट वी अडॉप्ट द डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी कि सर्वर्स ने चेंज होना है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेंज होना है, विंडोज होगी, लिनक्स हो गया, ऑल दोज थिंग्स, so why don't we develop it according to that? The answer is we make it platform independent from the different context, because now we have to take into account कि different kind of device platforms would be accessing that model. जब different type of device models उसको access करेंगे तो there would be invariably some complexity arising from that. वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम सिमियन की बात अगर करते हैं, सिमियन माइट बी यूजिंग द डाटा, उसको जो डाटा रिक्वायरमेंट हो वो शायद एक डिफरेंट फॉर्मेट में हो, लेकिन जब हम एंड्रॉयड की बात करें तो मे बी एंड्रॉयड जो है वो एक्सएमएल को समझ लेता हो, तो वो क्या है कि जी गिव एवरीथिंग टू मी इन एक्सएमएल फॉर्मेट। तो हमारे पास जो डाटा स्टोर्स हैं जो मॉडल के साथ एसोसिएटेड है, वहां से डाटा किस फॉर्म में किस डिवाइस पर किस तरीके से जाएगा, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर मॉडल और आवर लॉजिक. So this also has to be platform independent. And then we finally talked about how to make the context aware application or the context aware part of the application platform independent. और उसमें हमने देखा कि there are two important dimensions in that. The first one is that we wouldn't rely on single resource. What we do is we will take a layered approach where we will designate some particular piece in the software or particular component to be responsible for collecting these kind of data for me. Because think of it, the context resources या वो resources जहाँ से आपको ये context की information मिलती है, that keep on changing. As the technology is growing, so are the sensors, so are the actuators, so are the web servers. Web server से data collect करने के लिए पहले XML थी, then REST services comes, and who knows what next is in line. But if you restrict yourself that okay, I will get information only in REST format or XML format, then you are restricting your application unnecessarily. Your application should be able to handle the variety of sources and variety of text formats. And then your application should also consider that some of the sources are active and some of other resources are passive. So that when you are collecting information from active sources, you should be able to subscribe to them so that they will agree whenever they will publish for you, they will give it the data to you. And some other sources that are passive, you are able to probe that web server and get information from them in the required format. और वो जिस format में देते हैं, if they give you information in the format that is understandable by your application, well and good. Otherwise, your application or that component should be equipped to translate the information into particular format. Let's say आपको information जो है वो एक series of number के form में मिली है, but your application require the data to be in XML format.
then that component should be able to translate this information into particular format. So these four components, or these four are the dimensions of what we think about when we are writing pervasive software, when we are writing software for pervasive platform. और इनको अगर आप देखें तो you will find out कि context awareness तो directly apply ही नहीं होती. There are very few cases in which your desktop environment has context awareness. The only source of context is your login information or maybe your connectivity कि आप किस Wi-Fi hotspots के साथ connected है. But normally desktops or laptops are not used for context aware computing. In this sense, like GPS भी use हो रहा है, बीच में direction भी use हो रही है, route planning हो रही है. This is not done there because these are not the devices that are thought of कि आप उन्हें इस तरीके से carry करके लेके जाएंगे. In other cases too, मॉडल की जब हम बात करते हैं तो मॉडल को हम एक totally different view से देख रहे हैं, that we are not looking off for the architecture itself, we are looking कि इसको कौन कौन access कर सकता है and how would we incorporate that. So that's why developing software, pervasive software for pervasive platforms is different and it's difficult. Let's take a step back and think about what we have seen so far. हमने अभी तक क्या चीजें देखी? हमने ये देखा कि pervasive platforms के origins क्या हैं. Lecture 1 से start करते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें cover कर. हमने ये देखा कि pervasive environment या ubiquitous environment के क्या origins हैं. What are the fields it has come from? उसके बाद हमने ये देखा कि ये evolve किस तरीके से हुई. फिर हमने ये देखा कि इसकी कॉम्प्लीमेंटिंग फील्ड्स कौन सी हैं, वो कौन सी फील्ड हैं जिन्होंने इसको डायरेक्टली अफेक्ट किया या इसने डायरेक्टली उनको अफेक्ट किया. उसके बाद हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आए एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर. लेकिन एक चीज़ जो आपने नोट की होगी कि अभी तक हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी एंड सम मोर थ्योरी के evolve किस तरीके से हुआ, what are the domains that are involved in that. फिर मॉडल व्यू कंट्रोलर पे आ गया कि ये जी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है और परवेसिव प्लेटफॉर्म के लिए चूंकि there are number of devices involved, तो हम इसको किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं and how can we make platform independent components. What is next? अब हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल से थोड़ा सा रियल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे. वो किस तरीके से जाएंगे? We will start looking onto real world operating systems. We will start looking into real world devices. Okay, what are those operating systems that are prevalent in mobile environment? और उसके बाद we will move on to see what are their traits, what are their qualities, वो हमें किस चीज़ में facilitate करते हैं, what are their restrictions, and then we will finally move on to the development of software for these environments, the actual software environment. ये जो हम GPS location बार बार कहते हैं कि how we will fetch the GPS location, how would we actually do that? How would we write an application writing context awareness? But all this for next lectures. Till then, I am Abdul Aziz signing off. Allah Hafiz.